सर नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। आपका नाम बहुत सुना है सर मैंने। यूट्यूब भी बनाता हूँ फिजिक्स के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ, और आज मुलाकात हुई है आपसे। तो कैसे बनाते हैं, मैंने क्या कोई छोटे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? हम कुछ मैं इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे कर रखे हैं, उनको दिखाता हूँ कुछ लैब में, तो वो दिखा देता हूँ इस तरह से। और बाकी RC6 से जुड़ा हूँ, मनारिया साहब से, खन्ना साहब से जुड़ा हूँ। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज IPAT का कन्वेंशन है, 37 कन्वेंशन। ये जयपुर में आयोजित किया गया, जो कि RC6 यानी जो रीजनल सेंटर है 6 के द्वारा, जिसमें दो बड़े सेलिब्रिटी जो BL सराफ साहब और HN हंस साहब, जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उन्हीं के सेंचुरी सेलिब्रेशन के ऊपर ये आधारित है। और यहाँ पे फिजिक्स के अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आए हैं, तो आज उसी के लिए मैं आपको ब्लॉग करके दिखाऊंगा। और ये हमारे जयपुर में स्थित एक यूनिवर्सिटी IAS, उसमें ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें PK आलूवालिया साहब, रेखा मैडम जो कि बॉम्बे से आई हैं, और सबसे बड़ी बात SC वर्मा साहब, जो कि फिजिक्स IPAT के जनक हैं एक तरह से, तो वो कह सकते हैं। और फिजिक्स के बहुत बड़े नाम है SC वर्मा साहब, तो उनसे भी आज मुलाकात हुई। और ये सब चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे BL सराफ साहब, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, और इन्होंने फिजिक्स के लिए बहुत सारा काम किया। मैं इस चीज़ को ऐसे बता सकता हूँ कि ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित है, और ये बच्चों को पैसे देकर, यानी फीस देकर, उनकी फ़ीस देकर, या बच्चों को ट्यूशन देकर इस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये इनका एक एम रहा है फिजिक्स के लिए, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आज इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पूरा का पूरा प्रोग्राम किया जाएगा। तो आगे देखते हैं अपन वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप इसको। आगे आपकी फोटो भी, हमारे राठौड़ साहब भी आज आगे भाई साहब यूट्यूब में, आज इनको छोड़ेंगे नहीं। और राठौड़ साहब किससे जुड़े हुए हैं? आप किससे रिटायर हैं? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से रिटायर। तो देखो एटॉमिक एनर्जी फिजिक्स में चलती है, आज उसके बारे में कुछ बताएंगे और हम सुनेंगे। जालू वालिया से इसका so that echo doesn't interfere with our ears. I think I have been given a very privileged invitation to come on the dais and talk about two very distinguished presidents of IAPT, who really during the formative years of IAPT led IAPT to the kind of path which were required for an association of physics teachers. Though Professor Khandelwal was the one who created the nucleus, he also wanted something more on that nucleus also. So how could that have been possible? That could not have been possible without
inviting the best people around in the country to help it give a kind of a face which was well known to the people through these presidents. And that is why he got Professor Babulal Salam into it, got Professor H.S. into it, and after 40 years now we realized that they were great people who we could really engage on the platform of Indian Association of Physics Teachers. In 1990, I came to Jaipur, and it was, for attending a refresher course in physics, which was started in Academic Staff Colleges of University Arts Commission. There I was able to meet very many people. Professor Shikrodia was part of the experts who gave lectures in that. Professor D.K. Sharma was also there in that set of lectures. Professor Saxena was also there. And I think the most towering figure we encountered there was Professor Babulal Salam. And it was like this, that a person will, So next one you is the Now the next program in line. But now none the time for the real Saraf बढ़िया Memorial किया, बहुत Awards सुंदर किया इन्होंने। and Professor P.K. Ganesha, different experiments contributed to legacy of Professor Saraf and Professor Hans. Professor M.P. Kavita. This cover is designed and they have been designed and prepared by the English Canada in Turkey of Rajasthan. So it is request you to uncover. Oh, thank you so very much. So what happened is today is not present and is represented by our colleague Shivaska from St. Xavier's. So thank you so very much. These envelopes and stamps will be available tomorrow, okay, at the convention site. Okay, those who are interested, they can buy. ओके थैंक यू क्या 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 कन्वेंशन Okay. मिलेगा So as I feel very humbled speaking in front of such an august audience. I am just a Babu, a Swiss servant, but I did teach physics for 7 years under Professor Salah. And also that I was among the founding members of IAPT with Professor D.P. Khandelwal, who was then my teacher. It's a very interesting coincidence that Professor Salah, Professor Khandelwal and I came from the same college, that is our college. But as those who have been over time will know that the physics was in those days only taught at our college in North India. There were not many centers at the time. So I was very privileged. But I will
very quickly try to finish it because I don't want to stand between the lunch and my speech. So I would like to be very brief, but I will start with an invocation, the Sanskrit invocation. अखंड मंडल कारम व्याप्तम येन चराचरम तदत्तम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. See, the teacher is the ultimate, and he is like God. There is another one which we must teach our students, which is very famous, and I like to recite it also. Guru Brahma, Guru Vishnu, you all know that, but I must recite it. Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. So I would like to mention that I don't qualify to speak in front of such an august audience, but I learned it. So when I got into civil service and I was leaving physics, Professor Saraf told me that life is also there beyond teaching. He told us, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो साहब जान कहते थे मुझको, वो कहने लगे कि देखो अगर तुम फिजिक्स को दूसरे क्षेत्रों में भी लगाओगे तो दुनिया बदलेगी. हमने वो किया है, आपको उसके बारे में समझ में थोड़ा बताऊं. उन्होंने कहा एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था एयरक्राफ्ट के मैनेजमेंट का. When the aircraft is flying high in the air, जब हवाई जहाज उड़ रहा है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में. उन्होंने कहा एक फिजिसिस्ट था जिसको नौकरी नहीं मिली, निकाल दिया गया, वो पढ़ाने के योग भी समझा गया. उसने एक मॉडल डेवलप किया कि एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में कितनी दूरी कम करनी चाहिए. And suddenly the air traffic increased like anything because the distance was reduced. So the two airplanes could travel with a lesser distance between them. तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बता. So this is the book we used extensively in our MPhil course, and these books they are used in different colleges, and it has very comprehensive coverage of different practicals. So Professor O.K.S. Shastri is very passionate about physics and contributing regularly, and this is his contribution to the physics fraternity, and mostly this is on the experimental aspect and different experimental tools he has prepared. Thank you for the introduction. Effective implementation of new education policy, where along with the theory classes, we should have a large number of activities to develop the skills of our students. So keeping this in mind, we have written this book. And discussions, this is spin business. That spin is a purely quantum phenomenon, and we should not try to give any kind of classical model. And similarly for many other things, so I was very happy to get it validated what I have been doing. We will definitely interact more. Alright, so this particular topic that is given to me, social responsibility, and then training the trainers is another part. I don't know how the two are entangled with each other. But I think that training the trainers is a big social responsibility, and I have tuned my talk in that direction.
आई रिमेम्बर एक गीत आता है सिनेमा के अंदर में, क्या है, जीनत अमान है उस फिल्म के अंदर में दुनिया ने हमको दिया क्या और दुनिया से हमने लिया क्या, और हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा पहलू भी है कि जब दुनिया हमारी परवाह नहीं करती है तो हम क्यों दुनिया की परवाह करें। दुनिया हमें इतना दुख देती है, इतने परेशान करते हैं, तो हम दुनिया की परवाह क्यों करें। वो इसका दूसरा भी पहलू है। मगर जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है इट्स वास्ट वास्ट वास्ट, right? So many galaxies and whole, and the human mind is so developed that sitting here, this small planet, वो आज अपने कैलकुलेशंस करके they are able to tell that 13 or 14 billion years ago there was a Big Bang. And the signatures of that Big Bang are still present. And then the experimentalists are going and looking for those signatures and they find that yes, signatures are very much there. इतना जहां विज्ञान विकसित है, इतना जहां टेक्नोलॉजी विकसित है, वो अगर कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी अगर कहीं है, लाइफ अगर कहीं है, तो दैट इज ओनली ऑन दिस स्मॉल प्लैनेट अर्थ। वी आर वेरी वेरी स्पेशल। द होल प्लैनेट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड ह्यूमन ब्रेन इज वेरी वेरी स्पेशल। और अगर ये 14 बिलियन ईयर्स के इतने लंबे इतिहास के अंदर में आज की ये हमारी दुनिया जो है वो इतनी खूबसूरत दुनिया बन के आई है, इतनी यूनिक दुनिया बन करके आई है, इतनी स्पेशल दुनिया बन करके आई है, तो ये अगर आगे और अच्छी बने और बढ़िया बने और सुंदर बने और ये परंपरा चले, जीवन चले, आगे आने वाले बहुत सारे मिलियन और बिलियन ईयर तक ये परंपरा चले, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा, चाहे दुनिया हमारा कुछ करे या ना करे। हमारे पास दो तरह के चैलेंजेस कह सकते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमें बहुत दूर तक मिलियंस ईयर्स अभी के बाद भी जिंदगी बनी रहे, ये धरती और भी ज्यादा खूबसूरत बने, और भी ज्यादा अच्छी बने, और भी ज्यादा विकसित बने, वो एक दूर वाला दृष्टि है। और इमीडिएट दृष्टि भी है, हमारे चारों बगल दुख है। कहते भवसागर में आए हैं तो बड़े दुख झेलने पड़ेंगे, और इसीलिए भवसागर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के बाद लोग बहुत डरते हैं। मैं तो कभी मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसी भव सागर के अंदर में रहना चाहता हूँ, बार बार आना चाहता हूँ, बार बार चुनौतियां देखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध को वो दुख बहुत चुभता था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दर्शन वहां से खड़ा किया। तो इमीडिएट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये दुख नहीं होना चाहिए, ये दुख नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें ये भी करना और लंबा भी सोचना, तो ये बनता है। और ये जो दुख है, अभावों का दुख नहीं, अभावों का ही दुख है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजों के अभावों का दुख नहीं। हमें भूख लगती है, ये भी एक दुख है। हमें रहने के लिए अच्छी छत नहीं मिलती है, ये भी एक दुख है। लेकिन एक बहुत बड़ा परमानेंट बैकग्राउंड है, माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा बैकग्राउंड है कि हमें अज्ञान का दुख है, हमें ठीक प्रकार से सोचने की शक्ति विकसित नहीं हम कर पाते हैं, इसका दुख है। और इसलिए इस अज्ञान का दुख को, इस अभाव को अगर हम दूर करते हैं तो हम बहुत सारे तात्कालिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। विवेकानंद जी का मैं कल ही सुन रहा था, वो उनका प्रवचन सुन रहा था, उसमें ये बातें हुई, मैं कहीं वहीं से मुझे अभी ये बातें याद आ रही कि जो ज्ञान का अगर किसी को आप सहायता करते हैं, किसी के अज्ञान को मिटाते हैं, उसको सही दिशा में सोचने की ताकत देते हैं,
तो उससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बाकी सारी चीजें एक बार सोचने की दिशा ठीक हो जाए, ज्ञान आ जाए उसके अंदर में, तो फिर सारी समस्याओं का समाधान व्यक्ति खुद कर सकता है। लेकिन अगर सोचने की दिशा ठीक नहीं है, सही डायरेक्शन में सोचने का संस्कार नहीं है, तो कुछ भी करो, कितना भी खाना रख लो, कितना भी सुख सामान रख लो, वो दुखी ही रहने वाला है, सुख नहीं पाने वाला है, उसके दुखों का कभी अंत नहीं। यहां पर आता है कि ये सोचने की प्रक्रिया को विकसित कौन करेगा। तो हम शिक्षक लोग तो उसी के लिए, हमारा प्रोफेशन वही है, हमने तो कसर उसी की खाई है, हमने तो चुना ही उस रास्ते को है जहां के हम विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको सुबह हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय अविनाश सिन्हा जी ने बिल्कुल यही बात की कि हमारा एजुकेशन जो है वो सोचने की दिशा सिखाना चाहिए उसको। सब्जेक्ट क्या है, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, वो तो बहुत छोटी चीज है। सही ढंग से सोचना अगर हमने अपने बच्चे के दिमाग में डाला और उस प्रकार से उसको ट्रेन किया, तो वो सच्चा एजुकेशन। और वही है ज्ञान का दान, वही है अभाव, ज्ञान के अभाव का निराकरण, और वही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहां पर आती है बात कि हर शिक्षक जो है, हम कितने सक्षम हैं, हम शिक्षक जो है वो कितने सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। जिस तरह विद्यार्थियों के बारे में कहते हैं ना कि अगर उसने सभी चीजें जो बताई गई वो याद कर ली और परीक्षा में ठीक ठीक उसको लिख दिया, तो हम समझते हैं कि उसका मैंडेट पूरा हो गया, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसने ठीक ठीक कर दी। और उससे आगे बढ़कर के अगर स्टूडेंट समझ भी लेता है चीजों को याद करने के पहले और इम्तिहान में लिखने के पहले समझ करके याद करता है, समझ करके लिखता है, तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है ये। तो वह शिक्षकों का भी कुछ काफी हद तक ऐसा हाल है कि जो टेक्स्ट बुक में है, जो सिलेबस में है, उसको हमने पढ़ा लिया, समझा दिया, तो हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट तो ऐसा ईमानदारी से हमने अपना मैंडेट पूरा किया। और उससे आगे बढ़कर के और किसी ने कुछ एडिशनल उसमें और इंफॉर्मेशन वगैरह डाल करके और केवल बच्चों को याद नहीं कराया, केवल उनको परीक्षा के लिए तैयार नहीं कराया, केवल बहुत सारे नंबर आए यहीं पे वो रुका नहीं, और उसने उस विषय की गहराई में जान करके वो समझ भी विकसित करके विद्यार्थियों के अंदर में, तो उससे तो फिर बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। बट अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू थिंक, ability to understand and ability to think, these are two different domains and these are two different aspects. When I say ability to understand, that means that someone is telling something or someone has written something, someone has given the explanation and I am understanding that. And when I say ability to think, then there is no someone, I am thinking. That is ability to think. And that ability to think, ये अपने में और फिर अपने स्टूडेंट्स में ये ले जाना, ये हमारे we are able to think. First is able to get the knowledge and then understand it well. No confusions, no oversimplifying what हम उसको अच्छी तरह समझते हैं। एंड देन द एबिलिटी टू थिंक, ये अपने होती है। और यहाँ पे हम शिक्षकों के साथ में जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं उसमें मैं भी ये ध्यान रखता हूँ कि इस तरह की चीजें जो है वो चले। आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ छोटे छोटे। आप बताओ, जो लाइट की अभी इतनी सारी बात हो गई, तो लाइट में कितने कलर्स होते हैं? बोलिए, इनफाइनाइट कलर्स होते हैं ना इनफाइनाइट कलर्स। कोई बताते हैं 7 कलर होते हैं, कोई बताते हैं इनफाइनाइट कलर होते हैं, कोई कहते हैं 3 होते हैं, प्राइमरी तो 3 ही होते हैं। बट वी ऑल्सो से दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
It's a combination of electric field and magnetic field in a specific manner. Now, are there colors in electric field? Infinite colors in electric field? Are there colors in electric field? Yes or no? बोलिए बोलिए या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए. Are there colors in magnetic field? No. Then how can colors be created in a combination of electric and magnetic field? There are no chemical reactions. वो नहीं तो क्या फेनोप्थेनिल डाल दो और ये कर दो तो कलर लाल से गुलाबी हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता नहीं है. So if electric field doesn't have any color, magnetic wave doesn't have any color, and light is an electromagnetic wave. It is a combination of electric field and magnetic field with certain boundary conditions. Propagation direction, electric field, magnetic field, this, blah, 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 whatever. But how can we say the three things together? हमने सोचा नहीं ना, हमने सोचा नहीं, ये सवाल खड़ा किया नहीं, तो हम वो नहीं करते. आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ. इस क्लास 6-7 के अंदर में we talk of chemistry people generally or science is at that level, class 6 and level, it's all science, it's called science. But generally it is said to be in the domain of chemistry, the phases solid, liquid and gases. Now when I was in class 6, maybe 1960s, early 1960s, तो बहुत साल हो गए, 60 years तो कम से कम 70 years, not 70, 60 years हो गए. तो I take this definition. Solids are those who have fixed shape and fixed volume. Liquids are those who have fixed volume but not fixed shape, and gases do not have fixed volume and also not. Now that I am able to think a little bit, I asked my chemistry colleague, a professor from Delhi University. He was writing a book in that at middle school level, and he wrote this definition: solid, liquid, and gas. So I asked him, sir, the shirt that I am wearing, it doesn't have a fixed shape. It doesn't have a fixed shape. If I am wearing it, it takes shape of my body. If I just fold it and put in the alumina, it has a different shape. If I put it on a hanger, it is a different shape. Right now, this much is the distance between this part and this part. When I put it in a hanger, that difference will shrink to millimeters perhaps. The electric wires which they put in these lines, these electric wires have different shapes. When it is at the shop, they are all coiled and then put somewhere there. And when depending on the shape of the building, that wire will also take different shapes. So how does it fit in the definition of solid? But for more than half century, I studied these things some 54, 55 years ago. And even now when the professors are writing textbooks, they are writing the same things. We are not raising questions. The questions are not coming to our mind. We are not thinking. In the NCERT book, class 12, there is a section on convex lens, or class 12 or maybe class 10. धन से सुख नहीं मिलता है, फिर भी अज्ञानता के कारण हम धन अर्जन के लिए ही सारा काम करते हैं. अज्ञानता के.
उसी संस्कार को मिटाने का ऐसा Many thanks, Professor Harnath. Very beautiful lecture. I have learned many things. But to me, the problem is quite different. I have read his famous essay, almost written 40 years earlier, in Physics and Society. Physics is for the society. Okay? I think every part we have told, it is actually consistent with that. Inconsistent with the recent observations made in National Curricular Framework. I have seen it has made comments that in classroom teaching, physics is not supplementary to text events. Never. Number one comment. Second comment is that first comment is that in classroom situation, व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करें। संभव नहीं है, जैसा वेंकटेश सर करें, नंबर चाहिए, एडमिशन लेना है आईआईटी में नंबर चाहिए, अगर नौकरी है तो नंबर चाहिए, बिना नंबरों के नहीं मिलेगी। आपको ऑप्टिमाइज करना सिखाना पड़ेगा बच्चे को, कहाँ रुकना है, बड़ों को पैसा कमाना कहाँ तक होना है, सोना है या पैसा कमाकर जगना है, जैसे सर ने बताया। सर निश्चित रूप से हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Sharma. Actually, in a sense, I feel out of place. In one sense only, basically, like I don't teach physics, and of course, I don't learn physics also. I think I'm subject to the laws of physics. Maybe I can bend over backwards and try to make a connection. In fact, since I work on history of science, one of the earliest papers was published in the Indian Journal of Physics. Was about the Indian Association for Calculation of Science, about Mahendralal Sharkar. बिहारी के थोड़े हैं तो बड़ा कंफर्टेबल है, बस कंट्री के लिए ऐसा है ना, यही चीज आगे पिछली पीढ़ी में तो। सर नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। आपका नाम बहुत सुना है सर मैंने, भी बनाता हूँ फिजिक्स के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ, और आज मुलाकात हुई है आपसे। तो कैसे बनाते हैं, मैंने क्या कोई छोटे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? हम कुछ मैं इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे कर रखी उनको दिखाता हूँ, कुछ लैब में तो वो दिखा देता हूँ इस तरह से। और बाकी RC6 से जुड़ा हूँ, मनरिया साहब से, खन्ना साहब से जुड़ा हूँ। हाँ, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो कि फिजिक्स पे डेबिटेड है, और आप मेरे ब्लॉग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूँ IPAT के भी आप मेंबर बन सकते हैं। IPAT से विभिन्न जो संस्थान है, देयर इज अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन दे आर कनेक्ट विद द IPAT। IITs जो हैं या दूसरे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो सब जुड़े हैं। तो IPAT को आप ज्वाइन कीजिए, और उसकी वेबसाइट जो दे रखी है www.indipat.org.in, इस पर जाकर इसकी मेंबरशिप लेके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और डिफरेंट तरह के जो रिसर्च एनिमिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनसे आप डायरेक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। थैंक यू।